एवरीवन, वेलकम टू किड्सNpedia। होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। सो आज हम मेरा फेवरेट चैप्टर कवर करने वाले फ्रॉम ग्रेड 8 फिजिक्स विच इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड यस, दिस इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको बहुत ही आसानी से अच्छे से पढ़ाऊंगी एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। सो बेसिकली आज हम कवर करने वाले हैं रिविजन। नाउ रिविजन मतलब पिछले मतलब ग्रेड 7th में हमने क्या इससे रिलेटेड पढ़ा था वो, बट स्टे ट्यून क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर या एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ सेकंड इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इसका आंसर दैट टू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो यस, और आपको मोटिवेट करने के लिए आई हैव गॉट अ कोट फॉर यू गाइस व्हिच इज देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। I repeat, there is no path to happiness, happiness is the path. So guys, stay happy, always keep smiling, and yeah, let's get started. Now revision. Now let's start with the revision. Now basically what is the electric current? Electric current is rate of flow of charge per unit time through a circuit. So basically electric current is a rate of flow of charge per unit time through a circuit. So this is the proper definition. ठीक है, आप ये पूरी आपको यहाँ definition मैंने दी हुई है. So when if there's a question that define electric current, so you can write this definition. Now basically अब सिंपल सेकंड पॉइंट जो हमारा है कि चार्ज फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यू नो दिस गाइस, दिस इज वेरी सिंपल, आपको आते होगा दैट चार्ज फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ करंट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। सो हियर Q इज द चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज, and T is the time. I don't think so T is तो आपको समझ में आ जाएगा, but Q by T. So this is a formula, आपको ये याद रखना है. So if there is a question to calculate the current, तो आप ऐसे कर सकते हो Q by T which is total charge divided by time. So next, SI unit of current is ampere. ये भी बहुत important, this can come as a 1 mark question. So yes, SI unit of current is ampere. Now next, what is this? यहाँ हमने इसकी इमेज क्यों लगा करके रखी है? बेसिकली ये एक एमीमीटर होता है. जस्ट अ सेकेंड, मैंने स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग देख ली, आई एम सो सॉरी फॉर यू गाइज. हाँ, सो इट इज एमीमीटर. ओके, नाउ व्हाट इज एमीमीटर? ओके, बेसिकली दिस इज एमीमीटर and it helps us to measure current. Okay, so it is an instrument used to measure current. So now if someone asks that what is the ammeter or what is this, you can clearly tell them and what does it do. Now कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स हम लोग को पता है. सो ये हम लोग एक इसको भी रिवाइज करते हैं. सो बेसिकली कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो चार्जेस को फ्रीली मूव करने देते हैं, ठीक है, तो दीज आर कंडक्टर्स, ठीक है. वाइल इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो चार्जेस को अलाउ ही नहीं करते मूव करने के लिए. सो दिस इज इंसुलेटर्स. अब कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है स्टील, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम भी है. सो बेसिकली सी यू कैन सी कॉपर, स्टील, तो दीज आर कंडक्टर्स. व्हाइल इंसुलेटर्स आर ग्लास, रबर, ठीक है, ग्लास, रबर, वुड, ठीक है. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स. व्हाई? बिकॉज दे डोंट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम, ठीक है. दैट इज व्हाई दीज आर इंसुलेटर्स. सो सी यू कैन सी ग्लास एंड नाउ हियर दिस वायर is made up of copper, ठीक है. let us just write just a second Cu. अब मैं आपको बताती हूँ, ये सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने आपके लिए इसलिए यही इमेज लगा करके रखी है. दिस इज कॉपर एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंसुलेटर, रबर, राइट? डोंट माइंड माय राइटिंग, बट या दिस इज रबर, राइट? ठीक है, दिस इज रबर. नाउ ये हमने यार रबर क्यों लगा करके रखा है कॉपर के ऊपर? बिकॉज व्हेन वी ह्यूमंस, बिकॉज वी आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई पीपल से कि जब आप यू आर यूजिंग
electrical appliances such as washing machines, a mixie, or these kind of stuff, these produce electricity, right? So you should have glass slippers. You should, when you touch switchboards, your hands should not be wet. अब इसका भी मैं आपको बताऊंगी, but see, you should wear glass, rubber slippers, or rubber gloves, because rubber is an insulator. So why do we have a rubber insulator around this copper wire? तो जब हम ये wire touch करेंगे, and what if the electricity is flowing through this wire, we might get current, we might get shocked. So that is why हमने यहाँ rubber लगा के रखा है for humans, for us to be safe, right? So yes, that is why rubber, एक insulator को हमने उसके around लगा करके रखा है. Now I think these are clear. Now इस यहाँ हम क्या करने वाले हैं? So this is really interesting for you guys. So अब हम कुछ electric circuit के symbols हम लोग करने वाले हैं. And now why is this so important? See, this is important because अभी आप ऐसे diagrams देखोगे, और या हो सकता है कि आपको diagrams बनाना पड़े, right? So for that you should know the symbols for each and every part used to complete the electric circuit, right? So let's get started. So first, this straight line is connecting wire. So to make a connecting wire, you just need to use a straight line, right? So this is a connecting wire. Now next, अगर हमें एक बैटरी दिखानी है, so basically what does a battery have? A positive and a negative terminal, right? तो ये देखिए, आपको एक ये positive terminal हमने बना दिया. Just a second guys, this is a positive terminal and this is a negative terminal. So this is a battery. What is this? This is a battery. Now a switch. Now what is a switch? Now basically हमें switch बनाना कैसे मैं आपको बताती हूँ. Like this. ठीक है, on and off के लिए a switch is made like this. ठीक है, so this is switch. Now next we have bulb. Now अगर आपको अपने diagram में bulb show करना है, so how will you make the bulb? Basically you will make a line and see, this is not a bulb yet. अभी इसके around में हम एक circle बनाएंगे. So here you get a bulb. ठीक है. Now अगर हमें एक ammeter बनाना है, see I already told you what is an ammeter, right? This is an ammeter. So अगर हमें एक obviously हम इसको draw तो नहीं करेंगे because it will take a lot of time. So हम लोग ammeter यहाँ कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ. First of all, this is just like a bracelet. ठीक है, just take it, this is a wire and this is one of the bead of the bracelet. ठीक है. So अब यहाँ हमें A लिखना है, A for ammeter. Ammeter. This is it. Ammeter. Now this switch was in off position. This switch was in off position. Now what if we want the switch in on position? अगर हमें switch को on position में दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? See, switch को on position में हमें दिखाना है, so we will show it like this. Switch on position. ठीक है? Now next we will have voltmeter. Now voltmeter is same as ammeter. हमें voltmeter को दिखाने के लिए same diagram use करना है, बस A की जगह हमें V लगा देना है. This will be voltmeter. अगर आप ये मेरे साथ बना रहे हो guys, that will be great because this you have to keep in your notebooks. तो कभी भी आपको बनाना पड़े, this will be easy. You can आप इस चीज को देख करके diagram आसानी से बना सकते हो. So yes, this is voltmeter. ना एक रेजिस्टर को बनाना है आपको, कैसे बनाएंगे? So basically you will make
this is a zigzag pattern, ठीक है, and then so this will be a resistor. What? A resistor. So yes, these are the symbols जो आपको help करेंगे एक diagram बनाने में. So you guys can take a screenshot or just write it in your notebooks. Now let's get started. To the question I was waiting for, do liquids conduct electricity? And the answer is yes, they do. Now how? See, now it does not mean that every liquid can conduct electricity. हर liquid electricity conduct कर सकता है. It cannot happen, right? तो जो liquids के पास impurities होती है, see, some liquids can conduct electricity because of the impurities present in it, ठीक है? So that is why they can conduct electricity. अब वो impurities are form of small amount of mineral salts, that's why. अब ये mineral salts electricity में कैसा रोल निभाते हैं? See, these mineral salts they break up into ions. What do they break up into? This is important, ions. Okay. Now, अभी जो ions है, there are two types of ions. One is cation and anions. So cations and anions. So basically cations are positive, just a second, cations are positive ions, so these are positive ones, and anions are negatively charged ones. Okay, so positive ions, which means I'm just writing cations, they get attracted to the negative terminal of the battery, of the battery, and then whereas the negative ions, the anions, they get attracted to the positive terminal of the battery. Okay, so the cations get attracted to the negative terminal of the battery and the anions get attracted to the positive terminal of the battery. ठीक है, अब होता क्या है, इस मूवमेंट से पूरा आपका सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है, which helps us in producing electricity. Okay, so this is the whole process how liquids can produce electricity. But there are some liquids which cannot produce electricity, such as oils. Okay, they cannot produce electricity, right? Okay. Petrol, kerosene, they cannot produce electricity. Okay, petrol, kerosene, distilled water. Now distilled water does not have any impurities in it. These liquid do not have any impurities, that's why they cannot conduct electricity. If they will have impurities, such as अब now good conductors की बात करें, जैसे tap water, इन लोग के पास impurities होती हैं. Tap water, what do we say, acids, bases, these have impurities, these have mineral salts, so that is why they can conduct electricity, right? So you guys can take a screenshot of it. I think you have. So let's just erase this all for all this confusion. So अब मैंने आपको कुछ examples भी बता दिए हैं कि पॉजिटिवली कौन से चार्ज आयन्स होते हैं, नेगेटिवली कौन से चार्ज आयन्स होते हैं. गुड कंडक्टर्स, लिक्विड जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, विच आर टैप वाटर, राइट, एसिड्स, बेसिस. और जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स, दोज आर व्हाट, those are distilled water, petrol, kerosene, because these do not have mineral salts or impurities present in it, that's why they cannot conduct electricity. So that was just it for the video. Hope you guys liked it. ये बहुत ही important video थी to start chemical effects of electric current, and hope you guys enjoyed. Stay tuned with the channel for the upcoming video for this chapter, and yeah, till then, bye bye.